We are back. Sorry for the day's break, but I think the IPL made up for it. And now that we have a full house, the fourth panelist that we have, Kushagra, was just in time to the meeting, just like how Delhi batsmen were just in time to the crease towards the very end. So, without further ado, let's start. We'll be starting in the first match. We saw Rajasthan taking on Royal Challengers Bangalore at Jaipur. They batted first. Sanju Samson was not in touch. He was not looking fluent, but Yashasvi Jaiswal carried throughout the innings to take Rajasthan to a respectable score of 170. I think a lot of it was a disciplined and a well-round bowling performance by the Bangalore team. And while chasing, they got a quick start from Phil Salt, who scored 50, a quick fire 50 of 25 balls, something like that. And then Kohli anchored the innings. He pushed, accelerated towards the end, and then Devdutt Padikkal closed very nicely. So all in all, I think if we are to summarize the first match, uh, I think RCB have won uh, four on the trot ahead outside of their house, and they've lost two games at their home. So क्या लगता है कुश या रेहान या नमन, आप सिर्फ आरसीबी के परफॉर्मेंस पे कमेंट करें कि चार बाहर जीते और दो घर पे हार गए? टीम हमको तो घर पे उन्होंने नहीं घर खेलना के था लिए कि बनाया सिंपली। था। सो बोलना मंजू। हाँ हाँ, बोल। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब लोग ऑक्शन में स्ट्रैटेजी बना रहे कि होम के लिए टीम स्ट्रांग होना चाहिए। आईपीएल ने बनाया कि होम के बाहर टीम स्ट्रांग होना चाहिए। आरसीबी को पूरा भरोसा था कि घर पे तो पता नहीं कौन सा भी टीम बनाएंगे, हम धुलने ही वाले। तो इट्स बेटर फॉर अस टू बिल्ड अ टीम अकॉर्डिंग टू वट एवर कंडीशन आर आउटसाइड होम। करेक्ट। So they've built a great team according to the conditions that are outside home. सो At this rate, they might just end the IPL with 7 wins, 7 losses, and then pass in on net run rate. तो आई थिंक गिवन दैट उन्होंने चार मैच जीत ली है छह में से, और आज काफी अच्छी तरीके से डोमिनेटिंग फैशन में उन्होंने जीत दर्ज करी है। राजस्थान के लिए काफी मोराल बूस्टिंग नहीं, डाउन मोराल परफॉर्मेंस रहा है उनके लिए पूरा टूर्नामेंट ऐसा रहा है कि वो लोग दो मैच खेलते हैं, एक एक जीतते हैं एक हारते हैं, पर उनमें कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रही। आई द Naman, have डिसीजन। you seen a heart rate graph? या Or बट इट्स मोर, लगता है नमन शाह की हार्ट बीट चली गई थी यहाँ पे एक सेकंड के लिए, पर जैसे भी है, सॉरी फॉर द जोक्स, इट्स जस्ट लाइक राजस्थान परफॉर्मेंस टुडे, बट ठीक है। सो एग्जैक्टली, सो आई थिंक आगे जाने के लिए राजस्थान को क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अपने तकनीक में, अपने गेम प्लान में? क्या देखते हैं आप आगे जाके? टीम चेंज कर दो भाई, I पूरी swear. टीम ही चेंज कर ऑनेस्टली दो। नहीं नहीं, ऑनेस्टली तो इवन इफ यू हैव टू गुड तो स्पिनर्स समय मतलब मानसिंह जुरे को पे। इतना पैसा क्यों दिए, मेरे को ये समझाओ पहली बात तो। नहीं, वो तो स्टार्टिंग से ऑक्शन स्ट्रेटेजी वाज रॉन्ग। क्या दे शुड हैव खिलाना नहीं है बच्चे को क्या मतलब? दे शुड हैव टेकन बटलर, दे शुड हैव टेकन बोल्ट, चहल, अश्विन, किसी को भी नहीं लिया। ध्रुव जुरैल को लेके बैठे हैं एंड वो टीम बॉलिंग भी नहीं कर पा रही है, अच्छे से बैटिंग भी नहीं कर पा रही है। और दे एक आर तो वो प्लेइंग। पान पराग को बैक करना बंद करो प्लीज। आई थिंक दैट इज उसको नॉट गोइंग टू उसको हैपन। आज उसको उसने ही तो पूरे रन्स इंडिया में मारे हैं। आसाम क्रिकेट बोर्ड छोड़ के कोई बैक नहीं करता है। सारा अली खान करती है, बट ठीक है। So, okay, so I think even our viewers want, even our panelists want that we stop talking about this video and move to the next match. So, मैं आप सब मैं आप सबकी ख्वाहिश मानता हूँ, और हम अब जाएंगे आज के दूसरे मैच की तरफ। दूसरी मैच थी दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस इन दिल्ली। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। रोहित शर्मा एज यूजुअल 20 रन के नीचे आउट हो गए स्टार्ट देके, और इंटेंट, फुल फुल इंटेंट के साथ उन्होंने कोई बल्लेबाजी इंटेंट की। भी नहीं था इस बार तो भाई, मतलब आउट तू होने क्या का इंटेंट ओडीआई से था कम ना स्ट्राइक भाई, रेट पे भाई। आउट होने का हाँ, इंटेंट था, उसमें तो फुल इंटेंट था ना, ठीक है। उसके बाद आई थिंक बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनाई। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां से नमन धीर और तिलक वर्मा ने एक लॉन्च पैड से फिनिश किया। मुंबई इंडियंस ने मारे 205 रन। कुश की टीम बैटिंग करने आई। पहले बॉल दिल्ली पे ने नहीं मारे 200 रन। जेक फ्रेजर मग्गप पहले बॉल पे आउट हो गए, उसके बाद आए करुण नायर। सो नाउ आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन ओपन टू द प्लेटफॉर्म। तुम लोग को जो बोलना है बोलो। करुण नायर पे भाई क्या खेला है वो बंदा, फ्लॉलेस इनिंग्स भाई, फ्लॉलेस। ट्रू ट्रू। डिजर्व्ड व्हाट 100 टुडे। व्हाट नो, डिजर्व्ड अ विन। ट्रूली डिजर्व द 100 टुडे। यस। नहीं, विन का तो देख, सी इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट दैट वन प्लेयर 11। इट्स अ बट टीम ऑफ ऑनेस्टली 11, दे हैव करुण टू। नायर took his opportunity with both hands.
Hmm. And we've seen with the domestic tournaments also, there was always a talk about giving him that shoe in into the Indian team. यहाँ पे भी भाई ने क्या खेला है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर. ही इज कम इन, प्लेड द शॉट्स, प्ले एंड उसका स्ट्राइक वो लाइक आई जस्ट सॉ बिट्स एंड पीसेस ऑफ हिज बैटिंग जब जब मौका मिला. और बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रोक प्ले था. ऐसा नहीं था कि रैश शॉट है, कोई ऐसा है कि अनकन्वेंशनल है. बहुत सिंपल सीधा सादा क्रिकेट खेला है और बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स स्पेशली इन गेम्स लाइक दिस. अगर डीसी की मिडिल लोअर मिडिल ऑर्डर ने हेड लॉस नहीं किया होता तो आज वो जीत जाते. But otherwise, really well done. Like from a very pure batting perspective, Karun Nair has been one crazy batsman to watch today. You don't see Bumrah taking down too often. In the power play, you saw he was reading him ekdam clearly and he was able to strike the ball cleanly. 6, 4, 6, and even Trent Bolt the way he attacked him in the beginning, he dominated the power play. एक तो So भाई that what is has where happened to Bolt? Past two matches I've seen, he's not been that effective in the power play. that happens when you don't play international cricket and you're only playing league phases, league cricket. Yeah, I've heard. I didn't know this. He's only traveling with You the only MI camps across, like MI Emirates, then MI New York, then MI whatever. So yeah, fair enough. Oh, by the way, need to your Look, Kush speak. It's his Yeah, match yeah. today. yes, वही so please. क्या. look, if I have to summarize this game, नहीं 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 Delhi नहीं were नहीं in नहीं नहीं control तू for समराइज पे रुक जा. तू most समराइज part पे of the रुक जा. game. प्लीज So समराइज मत so कर. let me speak. ठीक है चलो समरी बोल दे. मत दे, पूरा बोल, दिल खोल के बोल. See, Delhi were in control for most part of the game. If we look at Delhi's bowling, I think उन्होंने runs contain किए मुझे लगता है फिर भी 205 was not a very good score that way on that Delhi pitch. Probably 230, 240 would have been a very good score. 205 was a chaseable total. When Delhi came out to bat, JFM, I don't know what's wrong with him. इस बार अच्छा है कि दूसरे शॉट खेल के आउट हुआ वो अपना वो शॉट खेल के आउट नहीं हुआ. Across the line खेल के out नहीं So, हुआ. so that was a positive, first positive from Delhi's batting. Second was obviously Karun Nair. We've spoken a lot about him, and मुझे अभी भी लगता है कि there's no need to panic for करेक्ट. Delhi. They still have 4 wins under their belt. This was just one of defeat I feel जहाँ पे वो लोग ने मतलब चोक कर दिया completely. लोअर मिडिल ऑर्डर ने कुछ परफॉर्म नहीं किया. Poor decisions, poor running in the middle, that actually made problems for them. And still no need to panic. I think they have a good team. They can make a comeback even now. Why, If I what comeback? Aren't they literally top It's of the table? no, it yeah is not about comeback. Exactly my point. It is about the way they gifted the game to Mumbai Indians. That is what is frustrating me. Because for The most part of the 40 overs, Delhi were the better team. And you still give 38 away overs, the Delhi match. have won the match. They lost the match in 1 over. The point being, see very clearly what Delhi needs to do is one, back its own lower middle order to bat. Because what we've seen in matches prior to this is, I don't think they've batted beyond number 5 or number 6. Like post Ashutosh, they haven't been put into that corner where they don't have a finisher. So at that moment, I think to get your low middle order, especially when you barely have runs to chase, 12 रन 2 ओवर में, like 12 रन 1 ओवर में कौन नहीं कर सकता. So at that moment, you need to back your middle order to say, understand and basically clear those runs rather than go for a hit or take risky runs for no reason whatsoever. बस उतना ही करना है, वो होल प्लग करना है. They don't even need to make changes to this team. It's a wonderful team. Rehan, if I were to ask you now, enough said about Delhi कि उन्होंने क्या गलत किया, but what went right for Mumbai? One thing that we all know is that the ball was changed in the second half of the second innings, and the dry ball spun a lot. Karan Sharma, the game changer for Mumbai. What do you think about his performance and how that performance helped Mumbai change the entire tide? Oh, it was terrific. I thought that initially they would play Ashwini Kumar. To see Karan Sharma come as an impact player was a surprise to me. But we discussed this before the IPL that having that new ball would help to counter the dew, and it played a major role. If you saw that one over,
where he got the wicket of KL Rahul. That was the turning point. Also, getting Stubbs out during that time was very crucial. And even with Mitch Satner, even though he got hit for runs, but he was bowling at the right lines. But what went right for Mumbai, I feel, is the fielding part, is where they capitalized the most, where most teams in the tournament haven't done that well. Capitalized. Capitalized. Thank you for picking the. The Nice capitals one. were But capitalized. see, they would still. They shouldn't take much uh, joy out of this victory, Mumbai. They have made Yeah. some very stupid errors, is what I would say. The only one thing good for me was the batting order. It was according to what I desired. I saw Surya at 3, Tilak at 4, Hardik at 5, and finally Wiljax was not a part of the top 3. And the way Naman Dhir batted today was a joy to watch. लेट्स मूव ऑन टू कुश नाउ कुश क्या लगता है आपको आगे जाते मुंबई को क्या जैसे इन्होंने रेहान ने बोला कि ये बैटिंग ऑर्डर जो मुंबई का रहा है इट्स बीन अ वेरी big batting order and their victories of the past have been of this when this batting order has clicked, right? So do you think going forward when they move to Mumbai now to play Sunrisers on the 17th, do you think that when they come up against that bowling lineup and that batting lineup जो इतना इनके जैसे ही है full fire में, so what should be their approach? Should they go all guns blazing like they did today, or they should try and settle into the tournament now? No, no, I think the way you batted today, if to bat the similar way, and Wankhede being the surface it is always going to help you score runs at a very quick pace. So batting is not going to be a problem for Mumbai. I think they should bat the same way that they've been doing so far. Bowling में थोड़ा issue आ सकता है because Bolt has not looked no good bowler so far in the tournament. पावर प्ले में इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है उसका एंड बुमराह ने भी आज रन्स खाए तो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर देम knowing how SRH batted yesterday. Hmm. So So otherwise, I don't think there are any problem for him. so now if I ask the हाँ three of मतलब you, मुंबई के रास्ते पे एसआरएच के दानव खेलेंगे तो क्या होगा? Navratri. Uh, Naman, Rehan, and Kush. Now, if I were to just ask you to summarize today's match in one word, second match, पहला तो छोड़ दो, सिर्फ एक word में क्या होता? Starting with Naman. I don't think I can give it a word. I'm just going to laugh. Rehan, Choke. Kushagra, Stupidity. किसकी? Hey, Kushagra, you could have said capitalized, but या you did not. ठीक है कोई नहीं, वो हो गया ना एक जो कितने बार अभी हम तो वही करते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है कोई नहीं. Guys, that's it for watching this video. Thank you for watching this video. आज मैं भी पागल हो गया हूँ. We'll be back with another video for the preview of tomorrow's encounter. Thank you.